Okay, fantastic. Are you able to see me? Hi everyone, Ashish Kyal here. It's fantastic to have you all here. This is Friday at 4 and I'm going to discuss about markets, what's happening around, and we are going to look at some aspects of time cycle, which is known as Kal Chakra, and also combine that Kal Chakra along with the concepts of Gann square of 9 एंड देखेंगे कि मार्केट में क्या लग रहा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मार्केट इज गोइंग अप और डाउन एंड हाउ टू गो अबाउट इट. Before I move on, I just want to check if you are able to hear me out clearly, and I am checking with my team if we are live on YouTube. Everything looks to be okay. And if you are fantastic. So on the YouTube also, are we good? Are you able to see that? Fantastic, guys. So यहाँ पर and people who are watching there on the YouTube, you can join me on the Zoom platform just in case you are facing any kind of a network glitch. Okay, just give me a second. Let me just check that out if it is fine and I'm going to share it across. तो दोस्तों, आने वाले वीक में क्या लग रहा है, मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, कहां पर पैसा बन रहा है और ऑप्शंस आईवी क्या कह रहे, साथ ही में कैसे हम देखें इस movement ko where Nifty has now come down below 25,000 levels and it's still sustaining there. So overall, if you look at it in a very simple way, we had a time cycle जिसकी deadline भी पार हो चुकी है. Prices should have given a positive traction, लेकिन हुआ नहीं. भाव भगवान से, price is God and we have to follow what it is suggesting. As per the prices, we managed to break below 25,000. आज का ट्वीट क्या था? मॉर्निंग ट्वीट वाज दैट 25,080 अगर ब्रेक होता है, we will head towards 24,980 odd levels, and Nifty went much below that, and the tweet worked out like magic. And also I am publishing short videos in between. I just want to check if you are able to see those short videos and is it useful? And the morning tweet levels which I'm sharing across to all of you, is it useful? I just want to check if it is useful. And okay, fantastic. Okay, it's useful. I can see Kiran, Jai, Sandipan, Mohit. The short videos are excellent. Thank you, Shishagri, Shubham. Short videos are awesome. It is the best. The tweet starts, my morning starts with your tweet. Okay, बहुत सारे जन के काफी अच्छे कमेंट है and people are loving it. So I'll continue with those morning tweets and continue with those short videos. Let me now share across my screen very quickly, and the short videos are like the power dose. Okay, awesome. So glad to know that. तो अभी चलते हैं, यहां पर देखते हैं साइकिल के बारे में, काल चक्र के बारे में, और क्या यहां पर गड़बड़ क्यों हो रही है मार्केट्स के अंदर, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन. And as I said, people who are there with me on the Zoom platform and sorry, on the YouTube platform, you can join me on the Zoom also. I am sharing across the link with you all over here. Very quickly. Okay, and if you are able to see the screen here, can you see that? Are everyone? Okay, if you're looking at this specific chart, this is a neo wave chart. I'll come back to the Gann square of 9 chart also कि कौन से Gann के लेवल्स है और टाइम साइकिल के हिसाब से क्या पता चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या लग रहा है यहाँ पे. So if you are looking at this specific chart, I can say very clearly, there is a very short-term support, which is at 24,763, and 24,728 is the Gann level. That's the main reversion level. We can see that prices have been falling on the downside. There is no respite of breaking and managing to go up. Even today, prices opened down. There was no attempt on the upside or the pullback, and we closed below that 25,000 mark. So the overall undertone as per price action continues to be on the sell side. Okay, इसमें कोई second thought नहीं है. The overall undertone continues to be on the sell side. And overall, if we have to turn on the buy side, I need to see some kind of a upside reversal. 25,080 was the level from where prices gave us sell opportunity, as I tweeted, got 150 points, done. You have to switch yourself from a positional trader still an intraday trader.
क्योंकि फिलहाल जो अपॉर्चुनिटीज चल रही है ना दोस्तों, वो पोजिशनल ट्रेडिंग में नहीं जा रही है, वो अपॉर्चुनिटीज इंट्राडे ट्रेडिंग में ही है। क्योंकि पोजिशनली अगर आप कैरी कर रहे हो, वेदर यू आर कैरिंग योर पुट ऑप्शंस, वेदर यू आर कैरिंग योर कॉल ऑप्शंस, पैसा नहीं बन पा रहा। एंड दैट इज वेरी ट्रू, वेदर इट्स बुलिश और बेरिश, बोथ साइड्स पैसा नहीं बन रहा। द कल्प्रिट हैज बीन अ लो IV. We can clearly see the IVs have crashed. India VIX was below that 11.5 था, आज थोड़ा सा ऊपर आया, but the IVs have been very very low. In such depressed IV, market मतलब momentum नहीं देगा. Okay, we need to see a very strong gap. After only a strong gap, we will know the direction of the momentum and if it sustains at that point of time. Now, if you're looking at this specific chart, one chart that I would recommend that very very clearly is to also keep looking at Bank Nifty closely. यहाँ पर बैंक निफ्टी का बहुत ही क्लोजली ट्रैक रखना जरूरी है. सो इफ यू लुकिंग एट बैंक निफ्टी चार्ट, बैंक निफ्टी clearly formed a very classic impulse pattern that you can see here. That's the 5 equal to 1 target still valid on the upside. So if you're looking at the Bank Nifty chart over here on the screen, are you able to see the Bank Nifty chart? Okay. So Bank Nifty completed wave 1, completed 2. Wave 3 here was 1.618 times of wave 1. Then we had a wave A. Let me just mark that. I think that is removed. We had a very classic wave A which got completed here, and post that wave A completion we had a ABC formation. Bank Nifty is following a 54 period of time cycle. Every stock and index follows their own individual time cycles. What is time cycle? Time means kal, cycle means chakra. Everything is governed by kal chakra. Everything is governed by time. Okay, and we apply that concept of time on stock market and understand what's happening around. So overall, if you look at this, the wave 4 completion happened here, and this happened also exactly on the time cycle day. This is what we were expecting even on Nifty to happen, but वो हुआ नहीं. It's okay, at times it happens. So यहाँ पर the low which is formed on Bank Nifty near the time cycle is at the level of, this low is at the level of 55,150. There are some people who are not able to see the chart. Let me just refresh it again. Let me just stop my screen share and reshare it across so that, are you able to see the chart now? Okay. If we are looking at this chart, okay, fantastic. So this is the low which is formed as per the time cycle, which is 55,150. That's the low. So ये जो लेवल है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल लेवल होता है. इसे हम कहते हैं टाइम सपोर्ट. ठीक है, टाइम सपोर्ट का मतलब हुआ जिस लेवल से प्राइसेस बाउंस बैक हुआ था फ्रॉम साइकिल जोन, वी कॉल इट एज अ टाइम सपोर्ट एरिया. सो बैंक निफ्टी हैज shown sharp recovery from the time support area. Possibly यहां पर फिफ्थ कंप्लीट हो गया है, वो अभी नहीं बोल सकते. उसके लिए वी विल हैव टू वेट फॉर प्राइसेस टू मूव बैक बिलो दिस जोन. इफ इट मूव्स बैक बिलो दिस जोन तो बहुत बड़ी गड़बड़ है. ओके, दैट इज व्हाट वी कैन से. बट शॉर्ट टर्म में इज देयर अ प्रेशर? डेफिनेटली यस. Since the low is below prior low, close is below prior low, high is below prior high, which means the trend is on the sell side. So Bank Nifty time cycle support is near 55,400 से लेके 55,150 तक. Okay, as per 54 days of cycle period. Okay, on upside, the major hurdle is going to be the gap area. The gap happened because of the Axis Bank result आया, results were not in the lines, and जो भी कारण हो, but भाव भगवान से prices gap down हुआ, gap fill नहीं हुआ, मतलब गड़बड़ है. Which means on upside 56,800 is going to be
hurdle, major hurdle. Now form a trading strategy within this zone. Sell on pullbacks unless close above the hurdle level. Prices are in wave 2 of 5. That's how it's looking to me as of now. So if you're looking at this chart, price looks to be in wave 2 of 5. We might have completed wave 1 of 5. This can be wave 2 of 5. Post its completion, we'll have the wave 3rd of 5, which should come on the upside. But right now, sell में है, buying नहीं करना है, avoid करना है, नीचे जा रहा है, यहां पर सपोर्ट प्राइसेस पे बन नहीं पा रहा है. So you have to remember to use that, and we will see how it goes from there on. That's one. We'll come back to Nifty now. On the Nifty, if you look at the hourly chart, it did go towards 25,250 levels. 25,250 has been the level I've been talking about. उसके ऊपर गया, थोड़ा सा 4 पॉइंट का स्पाइक दिया, and it reversed from there, and it's now broken down below the support of trend line. तो फिलहाल तो प्रेशर है, but we are in the zone which is this specific zone that has halted all the entire movement. So this is the extreme end of the zone, which is 24,500, and इसमें एक लेवल है 24,728 का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है. कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट लेवल एंड व्हाई वी आर रिफरिंग टू it as a very, very important level? That's the Gann level. Okay, Gann level. So if I go to the Gann chart now, यहां पर if you look at the Gann levels now, and यहां पर अगर हम देखेंगे बहुत ही क्लियरली, prices were here. 25,361 is the level that it should have come to. नहीं आया. It broke below the support level of 24,990. Now the magnet 24,728. That's the magnet. Okay, 24,728 is the magnet. That's where prices are going to oscillate around. Oscillation का मतलब है it goes down, it comes up, it goes down, comes up. That's how it's going to oscillate. It's going to oscillate around this level. So short term में view bearish है, and कब तक? जब तक प्रायर हाई के ऊपर नहीं जा रहे. टाइम साइकिल का क्या हुआ? टाइम साइकिल के हिसाब से बाइंग में आना चाहिए था मार्केट, प्राइस एक्शन कंफर्म नहीं करा. सो इट्स कंप्लीटली दैट वे कि आना चाहिए था, लग रहा था, सारी चीजें सिंक में थी, बट क्या करें, भाव भगवान से होता है ऐसा, जब मार्केट वही कर रहा है जो उसे करना है. फिलहाल तो वही हो रहा है. आर यू विथ मी? सो इन दिस सिनेरियो रेदर देन, बट इफ यू स्टिल चेक, the view has been positional, but the intraday trades have been still fabulous. Okay, the intraday trade has been still fantastic because these intraday levels have been working like magic. अपसाइड का टारगेट मिला था कल के दिन में, परसों के दिन भी मिला था, आज के दिन में डाउनसाइड का टारगेट मिला, which means the levels are still working fantastically well on intraday. जो विप्सा हो रहा है ना दोस्तों, वो पोजिशनल लेवल पे हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग इज प्राइसेस आर ब्रेकिंग डाउन बिलो अ क्रूशियल सपोर्ट, रिवर्सिंग बैक अबव इट, breaking above a resistance, reversing back below it. That's how the nature of the market currently is. And if you look at that, the India VIX has been absolutely flat, and India VIX has been coming down. Also, one more chart that I want to share across is the chart of a volume profile. Volume profile is a very, very important level that I want to share across. Just let me open up. Do you want to see the volume profile also? So देखिए ये sacred science है. काल चक्र with Gann square of 9, combined with these techniques, you will know when the next turn is going to be. Okay, so let us look at the open interest profile, and then we will also look at some aspects of volume profile. ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल क्या है, वॉल्यूम प्रोफाइल क्या है, देखना है आपको. चलिए तो मैं वहां पर ले चलता हूं, देखते हैं बिहाइंड द सीन्स बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं,
and Nifty time cycle is 55 days. There is no sell or buy signal as per Nifty time cycle even now. We are still waiting. Is the bullish outlook completely out of the door? Nahi. 24,728 padav hai. We will observe how prices behave from there, and then we will see if there is any need to give up our bullish outlook positional perspective. As of now, nothing has changed that says कि we should be turning super bearish. ऐसा हुआ नहीं है. देखते हैं क्या होता है. वीकली बायस बेरिश है, डेली बायस बेरिश है. शॉर्ट टर्म में इंट्राडे ट्रेडर बन के ट्रेड करना है, और ट्रेड करने के लिए ट्रेंड के साथ जाना है. ट्रेंड फिलहाल प्रेशर में है, इसलिए पुल बैक पे सेल करेंगे. कब तक? जब तक 25,080 नहीं ब्रेक होगा. Once that is broken, we'll turn from intraday traders to a positional trader and start riding it again. Am I making sense? Guys, are you with me? What I'm trying to communicate. This is the sign of a versatile trader on how do you manage the positions basis of the mood of the market. Market will not do what it has. Market will not move as per our mood. Market will do what it has to do. We have to manage our positions basis of what we think. Okay. Are you able to see the screen? The next chart over here, the open interest volume profile. Fantastic learning. Thank you very much. इस चार्ट पे दिख रहा है आपको एवरीवन? डू यू थिंक द इंडिया डील रिस्ट्रक्चर विल काउंट? बहुत सारे इवेंट्स है यार. लग तो मुझे वही रहा है कि कब से यूएस इंडिया डील, उस चक्कर में मार्केट वेट कर रहा है. उस चक्कर में वोलेटिलिटी घट चुकी है. आईवीज हैव क्रैश्ड, ऑप्शंस बढ़ नहीं रहे, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है. और ऐसा भी लग रहा है यार जेन स्ट्रीट के जाने के बाद में मार्केट में मजा ही खत्म भी हो गया. आर यू सीइंग दैट? एटलीस्ट मूवमेंट तो हो रहा था, अभी तो मूवमेंट भी खत्म हो गया. दे डिड इंडीड पे द 4,500 फाइन. दे आर स्टिल अवेटिंग द अप्रूवल टू लिफ्ट द बैन. दे आर स्टिल नॉट इन द गेम. बट यार खाली एक ही प्लेयर इतना बड़ा था कि बाकी का सब गायब हो गए. सो व्हाट हैज हैपेंड, ऑनेस्टली आई विल टेल यू. दिस एक्शन ऑन वन बिग प्लेयर has sent across a big warning to everyone else. Please do not mess up with the ecosystem of the market. Because of that message that has gone across, everyone who were active doing these kind of things just vanished. क्योंकि वो वैनिश हो गए, मार्केट से लिक्विडिटी ऑप्शंस मार्केट से ड्राइड आउट हो गई, वोलेटिलिटी निकल गई, विक्स क्रैश हो गया, आईवीज क्रैश हो गया, मूवमेंट नैरो डाउन हो गया. Everyone is sitting on the sidelines because the things are too hot right now. That's what I am gauging. Do you think that makes sense? Okay. यहां पर very clearly, यहां पर जो चार्ट आप देख रहे हो, this is known as an open interest profile. If you're looking at this open interest profile, you can clearly see a very sharp rise on the put side open interest, also a very sharp rise on the call side open interest, which is suggesting clearly the big players are still playing out a straddle position. Okay, big players are still playing out a straddle position, and right now on the upside 25,200 also is a huge amount of open interest build up on the call side. 25,500 भी है, मतलब ऊपर जाना अभी फिलहाल मुश्किल है. As of now, until some major gap happens, ऊपर जाना मुश्किल है. यहां पर the put sellers have still not given up, which means that put sellers will give up once the market breaks down below the support. तो अगर 24,920 ब्रेक हो गया, अगला पड़ाव क्या होगा? टेल मी. आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट एंड आंसर मी यार, देन ओनली मजा आएगा सिखाने में. 24,920 ब्रेक होता है तो अगला पड़ाव होगा 24,728. फैंटास्टिक. भवानी राम, गणेश, किरण, प्रकाश, शशिग्री, नितेश, एब्सोल्युटली 24,728 पे जाके रुकेगा. वहां पर प्रॉफिट बुक करो, बंद करो, वेट करो. इसी तरीके से मार्केट को वन डे एट अ टाइम, जीवन ग्लैड टू सी यू ऑल्सो हियर, वन डे एट अ टाइम ट्रेड करना. यही मार्केट का फिलहाल का नक्शा है, और नक्षत्र बता रहा है मार्केट का आने वाले वीक में कि टाइम साइकिल के हिसाब से क्या होने वाला है, वो हम देखेंगे आने वाले वीक में. मंडे को क्या होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑसम सर, यू रॉक.
गॉड ऑफ मार्केट, थैंक यू वेरी मच। अभी यहां पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा जिसे मैं कहता हूं वॉल्यूम प्रोफाइल। सो लेट मी जस्ट ऐड दैट वॉल्यूम प्रोफाइल ऑल्सो वेरी क्लियरली. It's a very, very fantastic study, and I'm going to add up volume profile here. We are going to look at this. I'm going to look at square chart. This is futures chart. This is a futures chart, which we have to keep in mind. Now, if you're looking at the futures chart over here, I'll hide the volume profile. Sorry, the open interest profile. It's a very interesting chart. In this chart, can you see the line which is here? Can you see this line? I'll just zoom in a bit. Can you see this line? 24,830 फ्यूचर्स है, 24,830 फ्यूचर्स का लेवल है. सो अराउंड 24,730 जो गैन लेवल आता है वो भी यहीं पे आ रहा है. फ्यूचर्स और गैन लेवल दोनों एग्जैक्टली कंबाइन हो रहे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, which is the highest volume. Can you see the amount of volume that has happened here? It's huge. So the profile, which is on the right hand side of the scale, represents the the overall profile of the market, and it represents what's happening at this level, and why price should stop at this level, because this is where big players have actually created their positions. Big players have created their positions का मतलब होता है यहां पर बड़े लोगों ने अपनी positions बना रखी है, बनाई हुई है. तो ये positions को they will try to defend. Okay, they have a very high tendency to defend these positions, and they should defend these levels and position. That's a very, very important level that one has to keep a watch on. That's very, very crucial. And so let's see, this is the volume profile. And if I combine this with one very powerful indicator, which is known as KST. Do you know what is KST by any chance? This is the Gann chart again on 1 hour time frame. KST is used as a signal on a 15-minute. I keep telling my Brahmastra participants, no sure thing. 15 पे सिग्नल के तरह एक्ट होता है, 1 आवर पे कॉन्टेक्स्ट के तरह एक्ट कर सकता है. कॉन्टेक्स्ट मीन्स हो क्या रहा है. In this KST, this is a 1 hour chart of Nifty Gann square of 9 with a KST. Okay, 1 hour chart है with a KST. If I'm looking at this chart, can I say that the support of the KST level, this is the horizontal line, that's the support zone. The hurdle zone of the KST level, that's the extreme hurdle zone. This is the level within which the entire movement has been since April onwards. Can you see that? अप्रैल में जो मोमेंटम बन के ट्रेड आया था, जबरदस्त चार्ट में ऊपर आया था, एंड ये मैं लेवल आपको दिखा रहा हूं. सो निफ्टी गैन स्क्वायर ऑफ 9, ठीक है, गैन स्क्वायर ऑफ 9 combined with KST indicator clearly provides a classic reversal areas for both intraday and positional traders. Okay, यहां पर you cannot miss knowing this science. It's a science. Why? Because in this science you can clearly see one very important aspect. Tell me and correct me if I'm wrong. I can go wrong, right? So I want you to learn so that you can correct me. Can I say whenever the KST came here and prices were near the Gann level, classic buying opportunity? Guys, do you agree with me? Okay. Prices, KST came here. Price is near the Gann level. Wow, directly to the next Gann. Prices came here. This was not near the Gann level. गड़बड़. Gann level पे price action. भाव भगवान से prices को देखना है. We have to look at prices and prices and prices because भाव भगवान से. Now, if शॉर्ट साइड पे ट्रेड करेंगे 920 के नीचे, टारगेट 24,728. 24,728 पे बाय नहीं करेंगे, आग बंद करके नहीं करेंगे, वेट करेंगे. व्हाट वी वांट टू सी, इफ द केएसटी टर्न्स बैक अप अगेन from here, कैन आई से
वी गेट अनदर क्लासिक अपॉर्चुनिटी। लेकिन ट्रिगर ऐसे ही पुल नहीं करना है, खाली ये देख के ट्रिगर पुल नहीं करना है, उसके लिए सेटअप पता होना चाहिए। उसके लिए सेटअप पता होना चाहिए कि कैसे 15 मिनट पे जाके ट्रेड करना है इस केएसटी सिग्नल को। That you is very very crucial for you to know. Otherwise you'll end up doing blunders. This is only the context of the market. Context का मतलब है ओवरऑल रुझान क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, कैसे इसे देखना है, कैसे इसे समझना है, और फिर इसे ट्रेड हमें करना है। और एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, मार्केट में ट्रेड करने से डिटैचमेंट होना चाहिए। लगाव हो गया तो पैसा नहीं बनेगा। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी यही कहा है, बहुत ही क्लियरली उन्होंने, बहुत ही, मैं सुन रहा था कल के दिन में, और बहुत जबरदस्ती जब वो अर्जुन को ज्ञान उपदेश दे रहे थे तो बहुत क्लियरली कहा है कि लोग चिंता करते हैं विषय के बारे में। विषय की चिंता करने से पैदा होती है आसक्ति। आसक्ति का मतलब होता है ऑब्सेशन। आसक्ति के पैदा होने से बनता है काम। काम मीन्स लस्ट अगेन फॉर दैट थिंग। काम के उत्पन्न होने से जो भी चीज कार्य आप कर रहे हो, उससे आपके मन में वो चीज अगर नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होने से विषय के तरफ मोह और भी बढ़ जाता है। मोह और बढ़ जाने से जो मन और बुद्धि है वो और गलत तरीके से सोचने लग जाती है, क्योंकि विषय के तरफ मोह उसका बढ़ चुका है, सब्जेक्ट के तरफ। बुद्धि अगर गलत दिशा में सोचने हो जाती है तो बुद्धि का होता है नाश, और बुद्धि का अगर नाश होता है तो मनुष्य का होता है सर्वनाश। ये मैं कल देख रहा था तो सोचा आप लोगों को बताऊं। बहुत ही सोचने वाली चीज है कि शुरुआत कहां से हुई और अंत में कहां तक पहुंच गए हम यहां पर। तो हर चीज लिंक्ड है। इसीलिए जब हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम उससे डिटैच होके ट्रेड करें कि भाई हमें उसके लिए भले ही लॉस हो या दर्द तो होता ही है यार, हर ट्रेडर चाहता है पैसा कमाने के लिए, बट इट्स वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड, if I'm making a loss I lose less, but if I'm making, I make a killing. If you follow that mantra, it will work like magic. That's how it has to be looked at. Thanks for the beautiful ज्ञान एंड ये उपदेश था तो मैंने सुना और सोचा आप लोग को बताऊं। तो यही चीज करनी है यहां पर। मार्केट से अटैचमेंट नहीं रखना है यार। बुलिश व्यू था, नहीं जा रहा है, ठीक है, नीचे राइड करेंगे, चलेगा। अटैचमेंट नहीं है, कहीं भी जाए पैसे बनाने से मतलब है, ट्रेडर है। 24/7 28 आएगा। पॉजिटिव आवरली आके एसटी पे मिला, गेन स्क्वायर ऑफ 9 से रिवर्सल मिला, बाय पे मूड बनाएंगे, फिर से इंट्राडे ट्रेड निकालेंगे और फिर इस तरीके से ट्रेड करेंगे। जब पोजिशनल ब्रेकआउट आएगा मैं ट्वीट करूंगा ना, वीडियो बनाऊंगा ना, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट पोजिशनल ट्रेड मिस हो गया तो क्या। I am going to be there with you when it is going to happen. I will alert you, I will warn you, I will tell you. फिलहाल तो मार्केट का व्यू इस तरीके से है। सो दोस्तों ऐसा है। और मजा आया कि नहीं आप लोगों को ये सीखने में और ये सारी चीजें बताने में। सिद्धार्थ शर्मा आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल रख रहे हैं जो हमने ब्रह्मास्त्र में किया है। और दोस्तों हमारा ब्रह्मास्त्र का नया वाला बैच शुरू होने वाला है फ्रॉम द मंथ ऑफ ऑगस्ट। I am going to ask you how many of you are in for this Brahmastra to learn this science very, very completely in. तो अगर आप करना चाहते हैं, you can register with the team. The link will be shared across, and you can also pay a 10K token and block your seat because बहुत सारी चीजें हम करेंगे आने वाले वीक में। हमारा Q&A सेशन होगा एसओडब्ल्यू का, उसमें भी ब्रह्मास्त्र पार्टिसिपेंट्स आ सकते हैं, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। एंड यहां पर मैं ये एक बहुत क्लियरली एक पोल ले रहा हूं। ये पोल को आप लोग पार्टिसिपेट करिए इफ यू वांट टू बी इन दिस ब्रह्मास्त्र और मेंटरशिप प्रोग्राम। Neo wave count is still correct. Yes, we are still looking at it as a wave F. There is no reason for me to change the count as of now. And so the Neo wave count is still going to be suggesting that it's an F wave. And share 10K token link, रेजर पे का लिंक शेयर करिए। आई थिंक आपने दूसरी कोई लिंक शेयर कर दी थी डायरेक्टर साहब, एक बार चेक करिए। And people who are watching this on YouTube, if you are liking it, do not forget to subscribe. Click there और कमेंट डालिए। देखिए आपके कमेंट अगर YouTube पे आते रहेंगे ना मुझे,
तो मैं आपको बता पाऊंगा कि ये मुझे वीडियो बनाने में मजा आ रहा है। बल्कि मैंने एक और चीज शुरू भी की है। मेरे YouTube के ऊपर जो लोग यहां पर देख रहे हैं, उनका एक लीडरशिप बोर्ड मैं यहां पर रखने वाला हूं, जिससे पता चलेगा कौन कौन लोग एक्टिव है YouTube पे भी। लेकिन जूम पे अगर आप आ रहे हैं तो जूम पे यू विल सी अ वेरी वेरी क्लियर इनसाइट एंड क्लैरिटी। यूट्यूब पे टेलीकास्ट में क्लैरिटी इज कॉम्प्रोमाइज, सो दैट्स अ लिटिल चैलेंजिंग। ओके, ऑसम। बहुत सारे जन पोल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आई कैन सी दैट एंड इट्स फैंटास्टिक। सो has the Nifty formed a double top? Nahi, it's too soon to conclude all of those things. Sir, what do I learn in this mentorship program? Please share across the link of Razorpay 10K token link. ये link नहीं चल रहा है. People are said that do that. I even asked you to share another link. Can you do that, please? Another link so that people don't face any kind of a challenge. And whoever is willing to register for the mentorship program, what do you get? In this mentorship of Brahmastra, we are going to kickstart with Kal Chakra. You will learn the concepts of time. You will learn the concepts of FLD, KST, Gann, Bring Special के. ये बहुत ही जबरदस्त चीज है. Gann square of 9 stocks पे apply करेंगे and you will love it. We'll start Brahmastra with that. Then we will start with the Brahmastra. उसके पहले एक Q&A session में रखने वाला हूँ जो past mentees के लिए है. And you will be invited if you are a part of the Brahmastra also, and you'll be that. Sonia, आपका number drop कर दीजिए. The course is going to be on English and Hindi mix, but you will understand. If you understand this webinar, you will understand Brahmastra. And we will be looking at not only that, we'll look at risk management, money management, how do we play stop loss, how do we look at the markets, how do we trade when the volatility is less, which strategy to form, how to risk manage, which scanners to run. यार 35 टाइम्स खिलाड़ी नंबर 1 जीता हूं, कौन से स्कैनर को चेक करना है? जेम्स, आपका नंबर ड्रॉप करिए. माय कलीग विल हेल्प यू आउट विद दैट. Yes, Sagar, the program is completely online, and post 3 months you are associated with me for lifetime. Even after 3 months there will be periodical Q&A session. You will be attending that. There will be certain videos, you will be seeing that. So, and also with a complete handholding where you will post your queries and charts in our premium community, and people are able to make it big. So they are able to make it big, and so you can also make it big. And fantastic. James, आपका number drop कर दीजिए. My colleague will call you up and you can simply, and they will help you out with the registrations of the Brahmastra program. If you are a fresher, Seema, do not worry about it. आपका number आ चुका है. Even if you are a fresher, it starts right from that level where you will get access to the basic technical analysis videos of Master of Technical Analysis, जहाँ पे right way of applying the indicators you will learn. We move on from there. We apply on day 1 the risk management tools. We look at trading psychology. बहुत ही crucial होता है trading psychology जो आपको देखनी है. And उसके बाद, so the mentorship program happens on in the evening on Wednesdays 7 to 10. And even if you miss it, recordings will be with you as long as the mentorship is on. So you are associated with me for nearly 3 to 5 months. And plus, along with that, you are also associated with me post that for the periodical Q&A sessions, the challenges you are facing, the doubts you have, all of those things we are going to be doing that. लवली गाइज, इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू ऑल. अच्छा, जाते जाते एक और चीज, यहाँ पे फीस क्या है? यहाँ पे आप जा सकते हैं मेंटरशिप के पेज पे. वंस यू गो ऑन दिस पेज, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक. आई थिंक द लिंक इज नॉट गेटिंग क्लिक्ड. प्लीज चेक ऑफ द मेंटरशिप offer page which is shared across. I am not able to click on the link. Okay, it's working now. So you can go on this link, you can register for this program, and you can get all the details of the program from this link, and you can do that. I'll just share the screen very very quickly. The poll is ongoing. जाते जाते एक और चीज, many of you are asking कि सर एक मास्टर क्लास है क्या कल के दिन में? कल के दिन एक मास्टर क्लास करे. Do not worry if you have doubts on the Brahmastra program. No softwares to buy, Ravish. No software is required except Go charting. If you need, you can take it later on. So वो भी बात की बात है. पोल में पार्टिसिपेट करिए, 10K पे करके you can block your seat. और एक मास्टर क्लास रखते हैं दोस्तों. That's the page. You can go and register yourself. You'll find all the details. Awesome.
So this master class on time cycle बहुत टाइम से नहीं किया है. डायरेक्टर साहब कल कर सकते हैं क्या? Time cycle master class. Can we do that? Shall we do that? Okay. Okay. Fantastic. We can do that. Link share किए क्या आपने for the time cycle master class tomorrow? Kal Chakra already is a part of Brahmastra, so don't worry about that. Kal Chakra. So you learn about time, you learn about options, you learn about. I'm now forming some different option strategies also. Given the very low IV, I will share that across with my current Brahmastra participants and the past Brahmastra participants also. So and it works fantastic. Kal Chakra can be applied even on 15 minutes intraday. Works like magic. एक और चीज कौन कौन है कल 11 बजे अवेलेबल 19th जुलाई मॉर्निंग 11 o'clock? How many of you are available? Just give a thumbs up if you're registered for this Kal Chakra, time cycle masterclass, which is going to be about Gann, price action, and time cycle tomorrow morning. How many of you are there? जय रवि शाप है, अमोल है, भौतिक है, बहुत सारे जन अवेलेबल है. यूट्यूब पे लोग अगर देख रहे हो तो आप लोग हो अवेलेबल. इट्स गोइंग टू बी ऑन जूम प्लेटफॉर्म. यूट्यूब पे हम बीच में बंद कर देंगे अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, बिकॉज आई वांट टू बी फोकस. सो इंश्योर यू जॉइन मी ऑन द जूम प्लेटफॉर्म. यूट्यूब पे वी माइट कंटिन्यू, डिपेंड्स ऑन how many chats we are getting and if we are able to manage it. James Street, you are going to be there, not going to miss it. Fantastic. Hussein, आप भी हो. Lovely. तो बहुत सारे जने, लेकिन रजिस्टर करना आप उस पे. Which is the best course for investment? Not interested in intraday? Sonia, Brahmastra. अगर आप अस्त्रों का अस्त्र है ब्रह्मास्त्र. Whether you are a trader, whether you are an investor, whether you want to see multi-bagger stocks, momentum stocks, it has to be Brahmastra. अभी मैंने श्री कृष्ण की जो कथा बताई, सेम ही थिंग है, ब्रह्मास्त्र. दैट्स व्हाई द नेम अस्त्रों का अस्त्र ब्रह्मास्त्र. So fantastic, guys. It was lovely speaking with you all. Thank you very much for joining me, listening to this Friday at 4. And if you are loving it, do not forget to tell me that. I'll continue this Friday at 4 and we'll meet you tomorrow for the Brahmastra Masterclass. Thank you.